Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 26th lecture of this series of Indian Constitution. In this lecture we would start with Article 32. So what we have to study in Article 32 is, first of all, you have to study the interpretation of the clauses. Clause 1, 2, 3, 4 उसके क्या interpretations हैं. Last clause का interpretation ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे हम, because that relates to emergency provision. But the first two clauses in particular we would see. लास्ट क्लाउज में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, सो इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ देखना और यू कैन डू योरसेल्फ. उसके अलावा इन पर्टिकुलर वी हैव टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 32, देन द नेचर ऑफ ज्यूरिडिक्शन. सेकंड वन, द नेचर ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट विद रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 32. नेचर ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट विद रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 32. Is it an original jurisdiction? Is it an exclusive jurisdiction? Is it an extraordinary jurisdiction? Is it an conferred jurisdiction? So that part, और फिर आर्टिकल 32 क्यों है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था, डॉक्टर BR अम्बेडकर, आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था द आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द पार्ट 3. ये आर्टिकल 32 है, इसी वजह से फंडामेंटल राइट्स है. मान लो अगर आर्टिकल 32 नहीं होता और मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, आर्टिकल 32 है नहीं तो मैं क्या करता, और मान लो 226 भी नहीं था, नॉर्मल एक सिविल सूट डालता और उसको 20 साल लगते डिसाइड होने में, और तब तक तो आदमी रहे ना रहे. तो ओवरऑल मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स का इम्पोर्टेंस तो खत्म हो गया. It is Article 32 which gives you right to directly move to the Supreme Court, and that is where the importance of the fundamental right lies. So in that way the Article 32 is important. Then you have to see how to move to the court. अब कहते हैं right to move to the Supreme Court directly for the enforcement of the fundamental rights is guaranteed under Article 32 Clause 1. So how to move the court? So उसके लिए फिर अगर टेक्निकल फॉर्मेलिटीज में उलझ के रह जाओ फिर भी तो आपका राइट डिफीट हो जाएगा. And therefore we have evolved the concept of public interest litigation. So you have to understand the dimensions of the PIL, public interest litigation, then also उसी से related judicial activism, plus writs का meaning. They will ask you in the prelims only, one-liner, habeas corpus mandamus prohibition quo warranto citrari. So read the first clause. The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. So they are saying the right to move the Supreme Court. The right to move the Supreme Court. Then they say by appropriate proceedings for the enforcement of rights conferred by this part. मतलब for the enforcement of fundamental rights. For the enforcement of fundamental rights is guaranteed. Means every individual whose fundamental rights is violated has a guaranteed fundamental right. अब देखो आर्टिकल 32 भी पार्ट 3 का ही पार्ट है, सो आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट हुआ. जैसे 14, 19, 21 ये फंडामेंटल राइट हुए, वैसे ही आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट हुआ, बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेम पार्ट. And therefore Article 32 also gives you a fundamental right. So every individual whose fundamental rights have been violated has a guaranteed fundamental right to move the Supreme Court for the enforcement of that fundamental right. Means to receive the compensation or to receive the remedies for the violation of that fundamental right. Every individual whose fundamental right is violated has a fundamental right under Article 32 Clause 1 to move the Supreme Court to have the enforcement of that fundamental right. अब they are saying that to move the Supreme Court by appropriate proceedings. What is meant by the appropriate proceedings? अब simply लिखते हैं यहाँ पर that right to move the Supreme Court is guaranteed. तो उस केस में आपको एक प्लेंट ड्राफ्ट करना पड़ता, पिटीशन ड्राफ्ट करना पड़ता, उसकी फीस लगाते, और जिसके पास राइट है, जिसका वायलेट हुआ है, वो अपना फाइल करता पिटीशन को. लेकिन यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स लिखकर हाउ द पर्सन विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, उसको उन्होंने लिबरलाइज कर दिया है.
दे हैव लिबरलाइज द प्रोसेस ऑफ मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट। और PIL का जो एसेंस है दैट इज दिस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप फाइल करते हो, यू कैन फाइल थ्रू ए लेटर ऑल्सो, थ्रू ए टेलीग्राम ऑल्सो, फोन कॉल ऑल्सो। वैसे ये सब थ्योरी है, ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जो फिजिकल फाइलिंग ऑफ PIL है वही इतनी पेंडिंग रहती है, तो इनको तो टाइम ही नहीं मिलेगा ऐसे PILs के लिए, बट दे कैन इफ द मैटर इज ऑफ सच काइंड। सो अनलेस इट इज ए वेरी वेरी मैनिफेस्ट केस इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तब तक PIL सुनेंगे ही नहीं है तुम्हारा, बिकॉज फ्रॉड के भी चांसेस हैं। जैसे मुझे किसी पे गुस्सा आ गया, मैंने PIL डाल दिया। सो हर चीज में PIL नहीं होना चाहिए, देयरफॉर दे आर कॉशियस। सो बाय appropriate proceedings you can move to the Supreme Court। इसी को हमने बेस बनाया है, and we have developed the concept of public interest litigation। The word appropriate means what? Appropriate means what? Whatever is appropriate in those circumstances। Now suppose I am a poor person, I am working in some person's house as a bonded laborer, my generation also working as a bonded laborers, and I am also bonded laborer। Bonded labor you understand, बंधुआ मजदूर। So I am bonded laborer और खाने पीने के लिए नहीं मिलता, so I am living in such circumstances। तो आप कहीं घूमने गए और आपने देख लिया दैट ही इज ए बॉन्डेड लेबरर, कि ही इज वर्किंग एज ए बॉन्डेड लेबरर, और ना मेरे पास कोई पैसे हैं ना हिम्मत है कि मैं इस तरीके का सूट कर सकूं या पिटीशन डाल सकूं, एंड यू आर ए पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन एंड यू गॉट पिटी अपॉन मी एंड यू देयर अपॉन कलेक्ट सम एविडेंसेस इन दैट रिगार्ड। और आपने मेरे ब्याह पे मतलब नॉट एज माई रिप्रेजेंटेटिव, आपने मेरे लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दिया। Now the point is, if had it been the concept of the normal proceeding, then your petition will not be entertained, क्योंकि प्राइवेट लॉ में आपका पिटीशन एंटरटेन नहीं हो सकता। प्राइवेट लॉ में जिसके पास लोकस स्टैंडाई है वही अपना पिटीशन डालेगा। जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है, आपस में लड़ते हैं दोनों, और पड़ोसी ने डाल दिया PIL और डिवोर्स करा दिया, क्योंकि उसको रोज सुनना पड़ता था। सो इन दैट वे इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इन ए पब्लिक लॉ इट इज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो यू हैव evolved the concept of PIL, we have evolved the concept of PIL because of the word appropriate proceedings is written। So that will become the base, that becomes the base of developing that PIL jurisprudence। And then if you read the second clause, that also the Supreme Court shall have power to issue directions or orders। The Supreme Court shall have powers to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari। In the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसमें बोल रहे हैं कि आप रिट्स भी इशू कर सकते हो। 5 तरह के रिट्स बता रहे हैं। हैबिस कॉर्पस हुआ, किसी को अगर इलीगल डिटेन कर रखा है तो वहां से रिलीज ऑर्डर पास करवा लो। मैंडेमस आपका हुआ कि गवर्नमेंट अपने ऑर्डर फंक्शन नहीं कर रही, तो ऑर्डर पास हो जाएगा that you must perform your functions। अगर गवर्नमेंट अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रही तो ऑर्डर होगा that you must perform your functions। देन आपका प्रोहिबिशन हुआ that a proceedings is going on in the subordinate court and the natural justice etc is violated, then the superior court, high court or the superior court may direct the proceedings to be corrected or proceedings to be withdrawn। देन द सेश्योरी इज, अगर निचले कोर्ट में किसी का नेचुरल जस्टिस वगैरह वायलेट हो गया है, देन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट कैन क्वेश दैट जजमेंट और ऑर्डर बिकॉज ऑफ द वायलेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। एंड द को वारंटो इज, सपोज यू आर होल्डिंग ए पोजिशन, you are holding a post, the court may ask you to show cause at
under what capacity, under what authority you are holding that post. So these are the various writs. But at the same time, if you see that the Supreme Court shall have the power to issue directions or orders or writs. अब writs तो समझ में आ गया that these are writs. But what do you mean by directions or orders? Writs, so you understand that habeas corpus etc. are writs. But what is meant by orders or directions? Directions are guidelines. जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें लेजिस्लेचर को भी आप डायरेक्शन दे सकते हो, लेजिस्लेचर को भी आप गाइडलाइन दे सकते हो. अब व्हाट इज ऑर्डर? अब कई बार क्या होगा कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, अब जैसे रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस, जैसे आपका वो केस था रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें इसको रिलीज ऑर्डर के बाद भी 12-13 साल तक अंदर बंद करके रखा था जेल में. अब यहाँ पर हैबिस कॉर्पस का ऑर्डर आया दैट ही शुड बी रिलीज फ्रॉम हिज इलीगल डिटेंशन. लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसको नुकसान भी हुआ है, इतने सालों तक फैमिली से दूर रहा है एक्सेट्रा, एंड देयरफॉर देयर शुड बी ए ऑर्डर ऑल्सो अलॉन्ग विद द रिट, एंड ऑर्डर वाज फॉर कंपनसेशन. तो ये जो कंपनसेशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देती है, दैट विल बी फॉल अंडर द वर्ड ऑर्डर हेयर. सो इन दैट केस शायद 50,000 का कंपनसेशन उसमें ऑर्डर हुआ था. सो वेन एवर द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, द सुप्रीम कोर्ट विल गिव यू द अप्रोप्रिएट रेमेडी. तो ये रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस वगैरह तो आपको मिल जाएगा, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड एंड कोर्ट फाइंड्स इट प्रॉपर, it may award compensation also. That compensation falls under the word order. So write down importance of Article 32. Article 32 has been considered to be the soul of the Constitution, and in particular of Part 3 of the Constitution. The fundamental rights are fundamental. The fundamental rights are fundamental and they have their value because of the right provided under Article 32. Had Article 32 not been there, there would not have been direct enforcement of the fundamental rights through the Supreme Court, direct enforcement of the fundamental right through the Supreme Court. And in normal civil suit would have been required to file through normal civil proceedings. That would have taken time, and the urgency of the enforcement of fundamental rights would have got defeated. Article 32 provides a fundamental right to move the Supreme Court for the enforcement of other fundamental rights, and it is here that the worth of Article 32 lies. It provides a special status to the various fundamental rights. So, fundamental rights का importance किस बात में है? एक तो ये कि that they are the basic rights and get directly guaranteed under the Constitution, and somewhere the principles of basic structure that is implicit in the fundamental rights. So you can say that these are the basic human rights which is directly provided in the Constitution, directly explicitly provided in the Constitution. But only providing that directly into the Constitution would not solve the purpose. Only declaring that you are having so and so rights will not solve the purpose unless you are provided a special procedure for enforcing the rights in the case of violation. अब अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होगा और आपको सेक्शन 9 CPC में नॉर्मल सिविल सूट अगर फाइल करना पड़ जाए, सो ऑब्वियसली दैट वुड टेक ए लॉट ऑफ टाइम. सिविल सूट्स विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उसको 20-25 साल लग जाएगा, बिकॉज फाइनल अपील तो सुप्रीम कोर्ट तक ही जाएगा. नीचे आप सिविल जज के पास फाइल करो, फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट. दैट वुड हैव टेक ए लॉट ऑफ टाइम. Here what they are providing in Article 32, you can directly go to the Supreme Court. Or 226 is there, Article 226 is there, in which you can directly move to the High Court.
So in that way ये जो बीच का process है that is avoided and you have a direct enforcement directly through the apex court if you talk about article 32. So that is where the importance of article 32 lies. So अगर आपके पास right है but remedy अगर normal remedy देते हो then that will not solve the purpose. You have to give some special remedies because these rights are also special. The special remedies is provided in 226 article, that is you can move to the High Court, or in article 32 you can directly move to the Supreme Court. So that is the speciality of article 32. It basically provides the special status to the fundamental rights, providing the special remedy. और क्योंकि आर्टिकल 32 भी पार्ट 3 में है, दैट ऑल्सो बिकम द फंडामेंटल राइट्स टू. अब दूसरा इसमें देखना है आपको द नेचर ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. द नेचर ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर्स ऑफ आर्टिकल 32. अब कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के पास इन सर्टेन केसेस इट इज हैविंग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब केस को आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हो. इन सर्टेन केसेस इट हैज गॉट एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन. In certain cases it has got the appellate jurisdiction. जैसे आप आर्टिकल 131, 132, 133, 134 ये सब पढ़ोगे आप in the Constitution. I think 131 it talks about the original jurisdiction. Interstate disputes, water disputes, तो इस तरीके के जो disputes हैं जो दो स्टेट के बीच में हैं या सेंटर और स्टेट के बीच में हैं, they will be taken directly to the Supreme Court. And there the Supreme Court, since you are taking it directly to the Supreme Court, so you can say that originally it can be taken to the Supreme Court. So in those matters, the Supreme Court has the original jurisdiction, plus in those matters can be tried only by the Supreme Court. So it has got the exclusive jurisdiction also. Exclusive means what? कि उसके अलावा और कोई ट्राई नहीं कर सकता. सो इंटर स्टेट डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट अगर है तो इसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे 131 में, दैट इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन. लेकिन बहुत सारे मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर हैं, सिविल मैटर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, 132 ऑनवर्ड्स, आर्टिकल 132 ऑनवर्ड्स, देयर द सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट द अपलेट ज्यूरिडिक्शन. Similarly, through Article 136, you can go to the Supreme Court with the special leave, that is also appellate jurisdiction. उसी तरीके से अगर आप आर्टिकल 32 में रिट डालते हो सुप्रीम कोर्ट में, then what is the nature of the jurisdiction? No doubt it has the original jurisdiction. Original means आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे you can directly go to the Supreme Court. But does it have an exclusive jurisdiction? अब एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसी मैटर पे आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो. सो यू कैन गो एदर टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट हैविंग द एक्सक्लूसिव. अगर एक्सक्लूसिव होता तो आप हाई कोर्ट नहीं जाते, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते. सो इट डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव बट इट हैज द ओरिजिनल बिकॉज यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. प्लस उसके अलावा इन द मैटर्स ऑफ आर्टिकल 32 you also say the Supreme Court has an extraordinary jurisdiction. Extraordinary means normally the matter go to the trial court first, but in the matters of the violations of the fundamental rights, you can extraordinarily directly go to the Supreme Court. That is a special case. You call it the extraordinary jurisdiction. You also call it the conferred jurisdiction. कन्फर्ड मीन्स सुप्रीम कोर्ट में जब आप चले जाओगे तो जैसे ही आप गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट गेट्स द ज्यूरिडिक्शन. फंडामेंटल राइट्स के केसेस में यू कैन गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइदर. द मोमेंट यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट गेट्स द ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई द मैटर, एंड दैट इज वेयर बाय फाइलिंग द रिट इनटू द सुप्रीम कोर्ट इज कन्फर्ड द ज्यूरिडिक्शन. ऑल केसेस वेयर यू file the writ petition into the Supreme Court, it will be said that you are conferred the jurisdiction in that particular matter to the High Court. Unless you go to the Supreme Court, या Supreme Court suo motu takes the matter, it will not be having the jurisdiction. So you got it conferred. Conferred से भी ज़्यादा important है extraordinary jurisdiction. Original तो होगा ही होगा. It has original
extraordinary conferred jurisdiction in the matters of writ petition under Article 32. Conferred और extraordinary में terminology का फर्क है. The difference is as extraordinary में आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो. In the very rare situation, an individual does not have the right to move the Supreme Court directly. और since individuals को right दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मूव करने का, that is an extraordinary situation related to fundamental rights, and therefore you are going there and you call it extraordinary. Plus, when you go to the Supreme Court, you are conferring the jurisdiction to the Supreme Court directly. You had the choice to go to the High Court also. So word का meaning तो same नहीं है, but the situation is same. So write down, the Supreme Court can be moved directly in the cases of violation of fundamental rights, and thus it has original jurisdiction, but it does not have exclusive jurisdiction, as in the same matters writ can be filed in High Court also under Article 226. Means it have original but not exclusive jurisdiction. Write down next point. The individual has a choice to go to the Supreme Court or to the High Court, and when he chooses to go to the Supreme Court under Article 32, he confers the jurisdiction to the Supreme Court, and therefore it is called conferred jurisdiction. Write down next point. Since the Supreme Court gets the jurisdiction extraordinarily in the matters of Article 32 through a writ filed by an individual, it is also called extraordinary jurisdiction. अब इसमें next topic is how to move the Supreme Court. When we talk about how to move the Supreme Court, when we say how to move the Supreme Court, it is here that the concept of PIL, Public Interest Litigation, comes into the picture. Public Interest Litigation आप हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं. उसके अलावा आप किसी और कोर्ट में फाइल नहीं करोगे. किसी और कोर्ट में अगर आपने PIL फाइल कर दिया, ये सवाल इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, कई लोगों से पूछ लिया, अगर किसी और कोर्ट में PIL फाइल कर दिया, then that court will not entertain. But in the interest of justice, that court may report the matter to the High Court. मान लो आप डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के सामने PIL लेकर चले गए, they will not entertain it, but they will not outrightly reject it also. So he will, as a matter of propriety, send the matter to the High Court. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली तो नहीं भेजेगा, बट इट विल सेंड टू द हाई कोर्ट. सो अगर आपसे इंटरव्यू में अगर कोई पूछे तो ये बोलना आप दैट आई विल नॉट एंटरटेन द PIL बिकॉज आई बाउंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ लोकल स्टैंडर्ड, बट द PIL jurisdiction is there with the High Court, and when I find the matter important, and normally in all cases, and referring the matter to the High Court, something you write about that matter and send it to the High Court, and High Court will see whether it would be entertained or not, or you will direct the petitioner to go himself to the High Court. Either ways. Public interest litigation क्या है? Suppose there is someone A. जब he himself does not have a cause of action. A के पास खुद cause of action नहीं है, मतलब A का अपना right violate नहीं हुआ है as such. His own right has not been violated. It is B or several people's, B, C, D, many people, उनके rights violate हुए हैं. But due to these right, their right, B, C, D, etc. इनके rights की वजह से, because their rights are violated, and due to lack of resources, or due to ignorance, or due to fear, these persons are not in position to file a petition for the remedy to the Supreme Court or the High Court. So this A who is acting in the public interest, और उसको कहते हैं हम pro bono publico. Pro bono publico means a person acting in public interest. He will file a petition. It is not on behalf. It is not as a representative of people. Rather, simply he filed the petition in the public interest that so and so right of so and so persons has been violated, and he also having some documents and proof which he has attached, and rest of the proceedings is left to the Supreme Court. A Supreme Court may require his presence in the proceedings, that is a different thing.
This person may be required to appear in the proceedings, the evidences and all. But once the Supreme Court takes up the matter, it is a public matter. उसके बाद the Supreme Court has the power to set inquiry commissions also. Supreme Court or High Court, they can send the inquiry commission on the spot, take the report from the commission, or otherwise it can inquire, and then finding the report to be positive that the fundamental right has been violated, it can take up the necessary action. That is what is public interest litigation. अब इसके कुछ safeguards वगैरह हैं, that will we see. जो public interest litigation का basic source है, जो इसमें appropriate proceedings लिखा है in Article 32 Clause 1, by writing the word appropriate proceedings, they are just keeping the scope open, that it is a matter of fundamental right, और fundamental rights को enforce करना, that is rather more important than hindering that enforcement too because of some technical formalities. Now in the private law, if you understand, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट, TPA, इस तरीके के जो लॉज हैं, तो एनी फैमिली लॉ या कोई भी प्राइवेट लॉ जैसे टॉर्ट. So in the cases of private law, the concept of locus standi applies. Locus standi का मतलब कोर्ट में वही जाएगा जिसके पास locus standi है. Only that person will move to the court who has got the locus standi, and locus standi means whose right has been violated. So if it is my right violated, I can go to the court. If your right violated, you can go to the court. So I cannot go to the court for the right violated against you. That is the concept of locus standi. जैसा एग्जाम्पल लिया था, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी ने PIL कर दिया और डिवोर्स करा दिया. So that is not a matter of PIL, that is a matter of private law. और private law में PIL नहीं लगता है. PIL will always apply upon public law. Private law में you have got that concept of adversarial proceedings. Adversarial proceedings में क्या होगा? That two opposite parties are there and one has violated the right of the other, and they will both appear into the court, and they will argue against each other, and they will present evidences against each other, and the court will be watching on that, and court will apply the judicial mind and decide the case. So it is here the person who moves to the court is the person whose rights has been violated. But then in the public law, it is not necessary. It is not necessary in the public law. That is, it should be adversarial proceeding. Public law में importantly it is inquisitorial proceedings. वैसे तो private law में भी inquisitorial लगता है आपका. Inquisitorial proceedings का मतलब उसमें judge participate करेगा. Means judge will always be proactive. Judge will also be proactive to examine. Judge can send commission. Judge can move a step ahead to find out the truth. That is inquisitorial proceedings. पब्लिक लॉ में फॉर एग्जांपल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में खास करके जो फंडामेंटल वाला एरिया है, दैट इज ए मैटर ऑफ पब्लिक लॉ. द फंडामेंटल राइट वाला एरिया, दैट इज मैटर ऑफ पब्लिक लॉ. एंड इन पब्लिक लॉ, if in public law you examine to sticking rigidly to local standi का requirement, and adversarial proceeding may defeat the rights in various cases, because in Indian socio-economic conditions, it will not be possible for every individual to move the court in the case of violation of his rights, because maybe of ignorance, because of fear, because of lack of resources, because of backwardness. Whatever be the case, the massive population we have and the level of poverty, backwardness we have, because you see, जब आपने लोगों को फंडामेंटल राइट दिया है, तो सिर्फ फंडामेंटल राइट देने से काम नहीं चलेगा. आपको फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टिव बनाना होगा, और इफेक्टिव बनाने के लिए आपको एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी क्रिएट करना पड़ेगा. Merely giving the fundamental rights is not sufficient. You have to create the enforcement mechanism, and the point is, how will you create the enforcement mechanism? The court cannot going to door to find out as to what is happening. लोक अदालत वगैरह है, but that will not go to see the violation of the fundamental rights as such. Plus, the court cannot go to door to find out
there is something called distributive justice. Now, distributive justice means what? Means the justice should not only to be done when it comes to you. Rather, you have to move ahead. You have to step ahead. You have to be proactive and do real justice. Distribute justice to the doorsteps. Giving justice to the doorsteps. अब वो कोर्ट खुद तो नहीं कर सकती. There are so many NGOs. They are doing it. There are so many public spirited person. They may do it. The court has to just keep the doors open. The court can also divide the mechanism. Court can take the suo motu proceedings. अब मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी या फिर हाई कोर्ट ने कहीं पे भी देखा न्यूज़पेपर में कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए सुओ मोटो कोर्ट अपने आप भी प्रोसीडिंग्स ले सकता है. उसके अलावा देयर आर मैनी एनजीओज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन. देयर आर मैनी इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन who can bring the matters in the notice of the court, and therefore the court should keep the doors open. Court cannot return the matter on the ground that you do not have the locus standi. Your right has not been violated. The technical formalities कि ये प्लेंट ठीक से फाइल नहीं हुआ है, इसमें तुमने कोर्ट फीस नहीं लगाया है, इसमें तुमने फॉर्मेलिटीज पूरे नहीं किए, एक्सेट्रा. So those kinds of restrictions in the matters of the fundamental rights has to be removed. And the word appropriate proceedings mean any proceedings which is suited in the particular circumstances. Any proceedings which is suited in the particular circumstances. So there we see the court had to liberalize, क्योंकि अगर कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को लिबरलाइज नहीं किया और ओपन नहीं किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो रिक्वायरमेंट है that will fail, and making the fundamental rights really effective, that will fail. Therefore, you see in the SP Gupta versus Union of India, Bhagwati Justice is the major person for these reforms in late 70s and early 80s. So he had given that judgment that a public spirited person, pro bono publico, he can file a public interest litigation, and in the Indian socio-economic conditions, public interest litigation will become a major tool for distributing justice for enforcing the fundamental rights. The issue is not as to how the matter is brought to the court. Issue is not as to how the matter is brought to the court. Means कैसे आप कोर्ट में मैटर को लेके आओगे, कौन लेकर आएगा, ये इशू नहीं है. इशू ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कोर्ट तक पहुंचना चाहिए. The issue is the violation of the fundamental rights coming to the notice of the court, and not as to who and how the matter is brought to the court. And therefore the court held that any person who is public spirited, he finds that the fundamental rights of a person or group of persons is violated with proper proof, he can always file the PIL in the court, and the court thereafter take up the action, do inquiry and whatever, and the court can provide the remedy. This is what is called PIL. अब PIL आप लेटर के थ्रू भी फाइल कर सकते हो, आप टेलीग्राम्स के थ्रू भी भेज सकते हो. इनफैक्ट यहाँ तक भी कहा गया कि आप फ़ोन कॉल इंडिविजुअल जज को फ़ोन कॉल करके भी PIL कर सकते हो. बट ये कहने की बातें हैं, बट एक्चुअली देयर आर टेक्निकलिटीज इन द PIL, क्योंकि अगर इस तरीके से अलाउड कर दिया तो हर एक कोई फिर PIL फाइल करेगा ऑन फोन कॉल्स. सो दैट इज़ नॉट दैट सिंपल. There is proper PIL units in the court, and that will be taking care of all that, and they are just to avoid any misuse of the PIL concept. But yes, through letters, through telegrams, etc. also the PIL can be filed. और जो आप letters और telegram के through जो PIL फाइल करते हो उसको कहा जाता है epistolary jurisdiction. When the PIL is filed by the letters or telegrams in the High Court or Supreme Court, letters, telegrams, fax, whatever will be called epistolary jurisdiction of the court. ये टर्म याद रखिएगा, पीटी में कई बार पूछ लेते हैं. Epistolary jurisdiction of the court. Then there are some safeguards. Epistolary means associated with correspondence by letters, associated with conducted by, suitable for letters, in the form of letter or letters. Through letters, if you send the PIL, that will be called the epistolary
jurisdiction of the court, High Court or the Supreme Court. अब एक बात और ध्यान रखिएगा, Supreme Court has been created as the protector and the guarantor of the fundamental rights. If the question is who will protect and guarantee the fundamental rights, the answer is obviously the Supreme Court, the apex court. And the Supreme Court has the powers under Article 32 to take up the proceedings. Plus there is one more article, Article 142. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. जैसे आपका क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है इन द केस ऑफ रूपा अशोक होरा वर्सेस अशोक होरा एंड अनदर्स इन 2002, उसमें वो भी आर्टिकल 142 के अंदर ही किया है. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 142 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है. दैट द ग्रांटिंग ऑफ द डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ irretrievable breakdown. 142 basically says the Supreme Court has the power to take up any proceedings and pass any orders for doing complete justice in the matter which is brought before it. The Supreme Court can pass any kind of orders, whatever may be essential in that case, in any matter brought before the Supreme Court. कई बार PIL में आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे and they will ask you, is the Supreme Court protector and guarantor? And you will say yes. And they will ask you under which article? And you will say under Article 32. But उससे एक काम नहीं चलेगा. They will ask you one more article, and that is Article 142. Supreme Court will do complete justice in the cases of suppose I am the person with public spirited and someone's rights are violated, I filed a PIL. अब जैसे फार्मर्स वगैरह सुसाइड करते हैं, देयर इज ए पर्सन हु पब्लिक स्पिरिटेड. अब सपोज PIL इज फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन दिस मैटर बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फार्मर्स, बिकॉज इट इज दीज पीपल्स हु आर गिविंग फूड टू होल नेचर. It is not about their agriculture and their personal profits and income, because where does that food goes? The village that produce whatever they are producing, that goes to all of us. So in that way, these farmers has right to get protected. Supreme Court. There is something called parents patriae. Parents patriae means the state is the guardian of all. और दूसरा है पब्लिक ट्रस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. द स्टेट इज द पब्लिक ट्रस्टी. तो स्टेट हम सब का गार्डियन है और स्टेट हमारे सारे रिसोर्सेज का पब्लिक ट्रस्टी है. उसका काम है कि रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज करे और रिसोर्सेज को वो ठीक से रेगुलेट करे. सो अगर आज किसानों को अगर बिकॉज ऑफ बैड वेदर एक्सेट्रा ये प्रॉब्लम हो रहा है तो स्टेट का ये काम है कि आप उनको प्रोटेक्ट करो, आप रिसोर्सेज को रेगुलेट करो. सो स्टेट वुड गिव कंपनसेशन टू द फार्मर्स, बट द गवर्नमेंट इज शोइंग इट्स इनेबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट दैट मच ऑफ मनी to large number of farmers because it will require lakhs of crores rupees. They always say that we does not have funds etc and we can always give this much of money. Now suppose PIL file हुआ and the government against the government and the Supreme Court finds that कि करोड़ों रुपए स्कैम्स में खर्च हो जाते हैं, करोड़ों रुपए आपके फॉरेन विजिट्स में खर्च हो जाते हैं of the Prime Minister and the others, even though that is going to paying in the long run, that is true because that is for growing investments, but whatever, but आपको पास फार्मर्स को बेसिक मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है. So the Supreme Court can direct to pay the amount. अब amount तो as such Supreme Court will not direct, but it can direct to give the adequate compensation because you are the guardian of the state and it is your duty because you are having a buffer of not only of grains but of money also. So state can also generate funds by collecting it from the private individuals through donations, plus the government is also having the government funds. So अगर कोई फार्मर खुद का सिविल सूट करे तो उसका सिविल सूट डिसाइड होते होते तो 10-20 साल लग जाएंगे and that will be too late. So there may be a public spirited person who may file the PIL. So that is the importance of PIL and that is the importance of fundamental rights because the farmers also have the right to livelihood, they have the right to live, they have right to live with dignity.
क्योंकि बहुत से फार्मर ऐसे होते हैं जो कर्जा लेकर खेती करते हैं, ज़्यादातर बहुत से, और उन पर पहले से कर्जा चढ़ा हुआ है और फसल बर्बाद हो गई। अब जो मनी लेंडर्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स से वो पैसा लेते हैं, दे आर प्रेशराइजिंग देम, प्लस अब उनसे कहा जाएगा कि तुम अपनी जमीन हमारे नाम करो, एंड सो फोर्थ। So many of doing that in the psychological pressure. Who is having the responsibility? Who is the guardian? The state. We, the private people, always support, but the state has to take the initial steps. And one more point, PIL is also one important tool for the judicial activism. Why? Because judicial activism is what? Telling the state, telling the executive and the legislature that you must do this and you are not doing this. अब ये जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को, खास करके एग्जीक्यूटिव को, उसके लिए मैटर्स कहाँ से आएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। So PIL is an important tool which enables the people to have the matters before itself. So PIL is an important tool which enables the people and the court to have the matters before itself, and then looking at the matter, court can pass the orders to the mandamus etc. to the state to do certain things which they are not doing. So in that way, PIL is the important tool to bring those matters to the notice of court, upon which या तो suo motu proceedings ले ले कोर्ट अपनी मर्जी से, और या फिर लोग मैटर लेकर आए। सो जो एक्चुअल सफरिंग ऑफ द पीपल है वो मैटर्स PIL के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एंड द सुप्रीम कोर्ट may direct the issue the mandamus to the state to perform its constitutional duties. So in that way we say that PIL is the important tool for judicial activism. So write down, the PIL is an important tool or instrument. PIL is an important instrument to bring the matters of violation of fundamental rights to the notice of the court. The Supreme Court is the protector and guarantor of the fundamental rights through Article 32 as well as Article 142, wherein the court has the duty to do complete justice to matters brought before it. The mere declaration of the fundamental rights in the Constitution and providing for direct enforcement through Article 32 in itself would not have been sufficient, as it is not only about waiting for a matter to come before itself and then to decide. Rather, it is about distributive justice, that is, the taking of proactive measures to make justice actually reach to the people, to their doorsteps. The court, therefore, is constitutionally duty-bound to provide the measures so as to attain the goal of distributive justice. Write down next sentence. In matters of fundamental rights in particular, there has to be a positive attitude of the court as well as the other organs of the state. The concepts like PIL and judicial activism are manifestations of the above approach. It was held in SP Gupta versus Union of India 1982 Supreme Court, Bhagwati Justice, that in the Indian socio-economic conditions, it may not be possible for every individual to bring its matter to the court. This may be because of lack of awareness, lack of resources, due to fear, और lack of willingness. क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस में हम गिवन अप कर देते हैं कि मैं इसी में ठीक हूँ, जो है वही ठीक है मेरे लिए, मैं कहाँ जाऊँगा, रेमेडी लेने में कहाँ जाऊँगा।
इन द पॉवर्टी वाले सर्कमस्टेंसेस में दे विल गिव अप कि ठीक है मुझे कोई रेमेडी नहीं मिली है, दैट इज व्हाई आई सेड दैट लैक ऑफ विलिंगनेस। इन such a situation in matters of public law, if still the adversarial proceedings and the requirement of locus standi are strictly adhere strictly adhere to, then the goal of real justice cannot be attained. Requirements of local standi are strictly adhered to, then the goal of real justice cannot be attained. The court constitutionally the court is constitutionally duty bound. The court is constitutionally duty bound to liberalize the proceedings to enable the matters to come before it. It is not important as to how matters comes to the court. Rather, it is more important that a matter actually comes to the court. Any person acting pro bono publico, that is in public spirit, may bring the matter to the notice of the court through PIL. This can be done even through letters, and it is not essential that the petitioner himself should have the cause of action. The matter comes to the court even through letters or telegrams. Now write down one more case. Fertilizer Corporation Kamgar Union versus Union of India 1981 Supreme Court. In this case, Krishna Iyer Justice for the first time had used the word PIL, and he had held that on the issue of locus standi, no hard and fast rule can be laid down in the matters of public laws. In public law, the requirement of locus standi has to be liberalized. He also held that with the development of the concept of PIL, the Anglo-Saxon SAXON system, एंग्लो सिस्टम मतलब जो ब्रिटिश टाइम का जो चला आ रहा था, ब्रिटिश रूल के टाइम का, द एंग्लो सैक्सन सिस्टम ऑफ adversarial jurisprudence have been broken. And litigation for public interest is now permissible in India. Now write down in the next paragraph, write down the name of case. It was Khatri versus State of Bihar 1980 Supreme Court. अब ये खत्री वाले बहुत सारे केसेस हैं, आप ऐसा कर लो खत्री 1 एंड खत्री 4। इसमें ये जो भागलपुर दंगे हुए थे उससे रिलेटेड है, उसमें खत्री वर्सेस बहुत सारे केसेस थे। इन द खत्री केस 1 एंड केस 4, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1980 सुप्रीम कोर्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम PIL was allowed। PIL टर्म यूज नहीं किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम PIL was allowed। For the first time PIL was allowed in the case, and subsequently it was allowed in Ratlam Municipal Corporation versus Virdi Chand, VIRDI Chand 1980 Supreme Court. After SP Gupta, the concept was further developed in Bandhwa Mukti Morcha versus Union of India 1984 Supreme Court. Bandhwa Mukti Morcha, bonded laborers. After the case of SP Gupta versus Union of India 1982, the concept was further developed in Bandhwa Mukti Morcha versus Union of India 1984 Supreme Court. That's all. अब सेफगार्ड्स के लिए एक केस लिख लीजिए। PIL पे सेफगार्ड्स के लिए एक केस लिख लीजिएगा। सेफगार्ड्स में आप लिख लें जनता दल वर्सेस HS चौधरी 1991 सुप्रीम कोर्ट। इसमें 3-4 पॉइंट्स है, राइट डाउन। तो राइट डाउन द नेम ऑफ केस जनता दल
versus H.S. Chaudhary, 1991 Supreme Court. First point, the court shall be very cautious. The court shall be very cautious in matters of PIL, and it shall ensure that PIL is not misused. PIL is not misused. Second point, the burden of proof lies upon the petitioner to prove that he is acting in public interest, not for any mala fide purposes, though it does not have to prove that he personally has the cause of action. The court shall be proactive in such matters and send inquiry commissions to find the real truth. And the fourth point is, once the PIL has been filed, the court should not normally allow the petitioner to withdraw the PIL. मतलब एक बार आपने PIL फाइल कर दिया तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, PIL किया, पैसे वैसे लेके विड्रॉ कर लेते हैं। जिसके खिलाफ PIL किया है उससे आउट ऑफ कोर्ट कुछ पैसे ले लिए, ब्राइब वॉट एवर, मिसयूज करते हैं और PIL को विड्रॉ कर लिया। सो इन दिस वे दे आर मेकिंग द PIL ए टूल फॉर मिसयूज फॉर अर्निंग मनी। देयरफॉर एक बार अगर आपने PIL फाइल कर दिया है, अब कोर्ट के पास पहुंच गया मैटर, सो इट इज ए मैटर ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट इज योर नॉट पर्सनल मैटर बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द कॉज ऑफ एक्शन। तो सिविल सूट की तरह आपको सूट विड्रॉ करने का राइट नहीं मिलेगा। तो जिस प्रकार से CPC में आप सूट का विड्रॉ करते हो, तो क्योंकि वो प्राइवेट सूट आपने फाइल किया, लोकस स्टैंडाई आपके पास है, बट हेयर द PIL इज ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर रहते हैं, तो देयरफॉर एक बार अगर PIL फाइल हो गया तो पार्टी को आपस में कंप्रोमाइज कर कर विड्रॉल का राइट नहीं होगा, बिकॉज दैट गोज टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड द कोर्ट इज द गार्डियन एंड कोर्ट विल सी दैट व्हाट टू बी डन. So normally it will not be allowed to the withdrawal of the PIL because that withdrawn can be misused to earn money, etc. if we allow to withdraw the PIL, if the court allowed to withdraw. So that's it for this lecture and for the topic of PIL. So by this we have completed one subtopic of this topic of Article 32. We will continue the judicial activism into the next lecture. Thank you for watching lecture.